ऑनलाइन एग्जाम दवाई जाउछंती करंट अफेयर केते मासर पढ़िबे को टाइप रो टॉपिक करंट अफेयर रो कवर करिवे ए वीडियो रे हमें डिटेल एनालिसिस करबा वीडियो को कंप्लीट देखंतु आपण बहुत किछि जानिबा को पाइबे। तो चलंतु स्टार्ट करबा। ए पर्टिकुलर एग्जाम सेप्टेम्बर मास 2025 रे कंडक्ट करा जायतिला आपनकर अपकमिंग एग्जाम पई बहुत काम रे आसीबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द गरुड़ शक्ति जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज इन नवंबर 2024। ए जगह रे मिलिटरी एक्सरसाइज ऊपर बेस करके क्वेश्चन पचारछि तो आपण ए जगह रे नोट करि नियंतु जे मिलिटरी एक्सरसाइज आपण कवर करिवे कहा कहा मध्य रे होछि इंडिया एवं इंडोनेशिया मध्य रे गरुड़ शक्ति जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्ट करा जाए। बहुत जन ओडब्ल्यूएससी रो एग्जाम देकी ओएमआर मोड रे से माने लास्ट 3 मंथ टू 4 मंथ भीतर करंट अफेयर पढ़ी एग्जाम दियंती तो तांको पई ऑनलाइन एग्जामिनेशन टिके कष्ट होई पारे कोन पई ना लास्ट 1 ईयर मिनिमम आपन को पढ़िया को पड़िबो एटा मने रखंतु। ए जारे नवंबर 2024 रो क्वेश्चन पचारछि माने ये होची लास्ट 10 मंथ रो क्वेश्चन। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा। ए जगह आंसर दे दिया जायछि सेटा हम पई मैटर न हम पई मैटर होची एनालिसिस करिबा। द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 वाज अवार्डेड टू विक्टर एम्ब्रोज एंड गेरी रुपकुन फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ नोबेल प्राइज ऊपर क्वेश्चन पचारुछि। नोबेल प्राइज केबे दिया जाए डिसेंबर 10 रे दिया जाए। ठीक अछि, डिसेंबर 10 रे दिया जाए माने लास्ट 9 मंथ रो क्वेश्चन ये। यार करेक्ट आंसर कोन हो माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो आपण नोबेल प्राइज मध्य देखि कि जिबे जे पर्यंत लेटेस्ट नोबेल प्राइज न मिलिछि ता पूर्व नोबेल प्राइज आपण को पई इंपोर्टेंट रहइबो। वेयर वाज द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हेल्ड इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 रो क्वेश्चन पचारला जोटा कि एग्जाम हेतिला सेप्टेम्बर 2025 रे। तो आमे कहि परिबा लास्ट 13 मंथ रो क्वेश्चन आसुची आमे हेमिति कहिबानी आमे 1 ईयर रो केवल पढी जिबा बुझी होची 1 ईयर ताठू अधिक एफर्ट्स दबा आदो दरकार नाही। क्लियर। यार करेक्ट आंसर होची न्यू दिल्ली ताको आमे स्किप करि परिबा। Which national day was celebrated across India on 25 January 2025 to raise awareness about democratic participation? अच्छा ये जो ऊपर जो क्वेश्चन रहला एथुर आपण मार्क कर नियंतु जे जेति कि भी समिट और कॉन्फ्रेंस एई सब भी कवर करिवे। ठीक अछि। अच्छा जो माने करंट अफेयर रो पेड ग्रुप रे जॉइन करिया पई चाहउचंती से माने मो से तो कांटेक्ट करि परिवे। एई नंबर रे व्हाट्सएप करी कि टॉपिक वाइज आपण करंट अफेयर पाइबे से ग्रुप रे। Which national day was celebrated across India on 25 January 2025 to raise awareness about democratic participation? Answer will be National Voters Day. National Voters Day. तो important days को नेकी questions आसुची। Important days को नेकी questions आसुची। What was celebrated in India on 10 March 2025 to honor a National Security Force? CISF Raising Day. Again कहबी important days क्वेश्चन आसुची। Where was the senior national badminton championship 2024 held? आपको हमें स्किप करिबा बेंगलुरु रे हेतिला। तो एथुर आपण मन रखि परिबे कोन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आसुची जेमिति कि चैंपियनशिप को जगह हेतिला स्पोर्ट्स रिलेटेड प्लेस को नेकी क्वेश्चंस आसुची को जगह रे इवेंट ऑर्गेनाइज हेतिला। Which country is scheduled to host 2025 Southeast Asian Games? अगेन सेम कथा कहला केउ कंट्री किंबा प्लेस रे ऑर्गेनाइज करा जाउची स्पोर्ट्स। तो 2025 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कंडक्ट करा जाउची थाईलैंड रे। क्लियर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई भारत मैटर्स पब्लिश इन द ईयर 2024? एस जयशंकर। एस जयशंकर को द्वारा लिखा जाइतिला। तो एथरे आपन को मन रखिया पड़िबो जे बुक्स एंड ऑथर्स आल्सो इंपोर्टेंट। क्लियर। सिमिलरली एबे जेमति मु करंट अफेयर रिलेटेड नै कि आसिली सेमिति मु हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी साइंस कंप्यूटर ए सब रो मध्य कंपाइलेशन नेकी आसीबी। ठीक अछि। द जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 बिटवीन इंडिया एंड यूएसए वाज हेल्ड एट डैश फील्ड फायरिंग रेंजेस इन सितंबर 2024। महाजन देखंतु एक्सरसाइज कहा का मध्य रे होछि एक्सरसाइज को प्लेस रे होछि आकु नेकी क्वेश्चन आसुछि। क्लियर। The Banking Laws Amendment Act 2025 redefined the reporting dates for banks for regulatory compliance to which days of every month instead of the second and fourth Fridays. Amendment किछि important amendment आसुची किंबा act आसुची introduce होची bill से सब भी देखि कि जिबे bill amendment act ए सब देखि कि जिबे। क्लियर।
In which of the following countries was the G20 summit held in November 2024? Already देखो आम नोट कर सारे जे कॉन्फ्रेंस एवं समिट रू क्वेश्चन आसूची तो आपको आपण कौन करेंगे नोट कर नियंतु जे कॉन्फ्रेंस समिट लास्ट 1 ईयर रो देखिबे किए होस्ट करथिला ब्राजिल. The United Nations declared 2026 as the international year of which of the following? यार करेक्ट आंसर हम वुमेन फार्मर. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निया जाउथुवा रिजोल्यूशन कौन कहूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निया जाउथुवा रिजोल्यूशन. शारदा सिन्हा awarded the Padma Vibhushan in 2025 is renowned for her singing in which of the following Indian language? शारदा सिन्हा तो ये जगह अवार्ड रे आमे तो जानले नोबेल प्राइज देन एबे पद्म अवार्ड पद्म अवार्ड्स. ठीक अच्छे आंसर विल बी भोजपुरी एंड मैथिली. भोजपुरी एंड मैथिली. Which of the following organization organized the Kaleidoscope Academic Conference 2024 in India? यार करेक्ट आंसर हम ITU. अगेन कॉन्फ्रेंस ऊपर क्वेश्चन आसिला. क्लियर. In the 2024 Travel and Tourism Development Index, what position does India hold? Index ranking group questions. Clear? 39 rank. Next देखिबा current affair. Which company or organization was not a part of the collaboration with Bharat Sanchar Nigam Limited for the Swadeshi 4G rollout according to the Indian government's October 2024 deployment? अगेन कहूँ लास्ट 1 ईयर जितेबाला भी ऑनलाइन एग्जाम दौरान जोटा कि TCS कंडक्ट करुच्ची लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर आप देखिकी जी. ठीक अच्छे यार आंसर हम इन्फोसिस. आंसर विल बी इन्फोसिस. बड़ बड़ कंपनी जितेबाला गवर्नमेंट सहित MOU साइन करुच्ची किंबा गोटे बड़ कंपनी गोटे छोट कंपनी को एक्वायर करुच्ची से सब भी इंपोर्टेंट रहिबो. ठीक अच्छे. नेक्स्ट. As reported in May 2025, which glacier in Nepal is said to join growing numbers of glaciers around the world declared dead due to temperature rise? Answer will be Yala Glacier. Important place, geographical place जेतेबेले कोनोसी कारणरू करंट अफेयर रे आसुची न्यूज को आसुची सेटा इंपोर्टेंट रहुची. क्लियर. What is India's rank in 2024 Global Hunger Index? ए जगह अगेन रैंकिंग इंडेक्स रो क्वेश्चन 105 थिला 2024 रे. In January 2025, which of the following state governments proposed generating 1000 megawatt of solar power by encouraging women self-help groups to set up solar power plants? यार करेक्ट आंसर हो तेलंगाना. करेक्ट आंसर विल बी तेलंगाना. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट माने स्टेट न्यूज भी आपको देखा पड़ो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निया जाउथुवा इनिशिएटिव भी इंपोर्टेंट. What were the dates for the 49th Sub Junior National Basketball Championship for boys and girls in 2024? स्पोर्ट्स रो एबे आमे जानिले जे इवेंट केउ जगह रे ऑर्गेनाइज होउची केउ कंट्री ऑर्गेनाइज करूची किबा को प्लेस रे ऑर्गेनाइज होउची एबो तार डेट भी इंपोर्टेंट रहउची. आगु आमे क्वेश्चन देखिबा पर्सन भी जे जितिला किबा के रनर्स अप हैला सी भी इंपोर्टेंट रहिबो. ठीक अछि. क्लियर. नेक्स्ट. Which of the following renowned Kathak dancer known for experimental choreography passed away in April 2025? कुमुदिनी लखिया obituary. ठीक अच्छे obituary देखिए important रोचे. Who among the following is New Zealand's youngest member of parliament suspended for protesting in parliament while presenting the Te Pati Maori in 2024? Hannah Roiti Maipi क्लर्क फीमेल बोधे जाना ये. ठीक अच्छे. नेक्स्ट. तो देखो को टाइप इंटरनेशनल न्यूज आसूची इंटरनेशनल करंट अफेयर. Who among the following Indian chess player won 2025 World Junior Chess Championship? मु लास्ट को वीडियो लास्ट को मु कहिबी जे कोन कोन अगेन देखिबे कोन देखिबेनी को मास रु को मास पर्यंत पढिबे आपनकर अपकमिंग एग्जाम जोटा कि RI एग्जाम आसूची ता पई मु कहिबी. Who among the following Indian chess player won 2025 World Junior Chess Championship? Pranav Venkatesh. How many Param Rudra supercomputers were launched by the Indian Prime Minister in 2024? 3. तो PM को द्वारा कौन लॉन्च करा जाउची सेटा भी इंपोर्टेंट रहउची.
Which of the following Indian actors was honored with the Indian Film Personality of the Year award at the 55 International Film Festival of India? विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी ये कवर करा जाइए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये जगह अवार्ड्स देखो फिल्म रिलेटेड अवार्ड्स बहुत इंपोर्टेंट रोचे। Who among the following is the author of the book PMO Prime Minister's Office Through the Years published in April 2025? करेक्ट आंसर कौन होगा? हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय। एक क्वेश्चन रिपीट हमारा भी चांस अच्छे जो माने भी एग्जाम देबे 2025 रे। क्लियर? Who among the following was awarded the 2025 Pen Pinter Prize for her writing on migration, faith and Muslim women's life? ये भी इंपोर्टेंट देखि नियंतु पेन प्रिंटर प्राइज विभिन्न प्रकार प्राइज अवार्ड्स को लेके क्वेश्चन आसुची। लेला अवोलेला। In which year was the Old Oil Fields Regulation and Development Act, which of the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 sought to amend passed? ये अमेंडमेंट ये करंट अफेयर क्वेश्चन बट जिनसटा पुराना जिनसटा को डिस्कस करा जायछि करंट सिचुएशन रे तो से टाइप रो क्वेश्चन को फ्रेम करा जायछि। ये क्वेश्चन इजी नुह नॉट इजी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कौन थिला? ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 1948 बोली मन रखिथिबे। ठीक अछि। Which of the following countries is said to host the first global conference on manuscript heritage in September 2024? अच्छा जो माने सेप्टेम्बर मासरे बर्तमान वीडियो देखुचंती सेप्टेम्बर 2025 रे समस्त जानी चंती इंडिया रे होस्ट करा गला। ए जगह रे पीएम इनागुरेट कले 12 तारिख 13 तारिख को मन पड़ुची किसी जो माने पढ़ी चंती manuscript आकु सेव करिया पई आकु प्रिजर्व करिया पई विभिन्न प्रकार इनिशिएटिव निया जायछि। क्लियर? ठीक अछि। तो आगु को को टाइप रो सबमिट हबा को जाउछि जोटा कि ऑलरेडी शेड्यूल हे सारी छि विथ डेट ताको भी मने रखिबे। As announced in July 2025, in which years will India host ISSF World Cup and the ISSF World Junior Championship respectively? देखंतु अगेन सेम कथा क्यों इवेंट आगु को हबा को जाउछि स्पोर्ट्स इवेंट 2030 कॉमनवेल्थ गेम के होस्ट करिवो ए टाइप रो क्वेश्चन। ठीक अछि 2027 2028 रेस्पेक्टिवली। ए क्वेश्चन रिपीट भी हे पारे ए क्वेश्चन रिपीट भी है पारे। क्लियर? नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की इंटरेस्ट ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया? ये तो हिस्ट्री आसीला हमें हिस्ट्री को गोटे डिफरेंट वीडियो रे कंपाइल करी कवर करबा जानिबा हिस्ट्री रो को चैप्टर रो हिस्ट्री रो को पोर्शन रो क्वेश्चंस आसुची। क्लियर? हु एटा करंट अफेयर Who succeeded Justice D.Y. Chandrachud as the Chief Justice of India in November 2024? Sanjeev Khanna. Sanjeev Khanna. Clear? Now, the important personality. India किए को पोजीशन रे अछंती बड़ बड़ पोजीशन रे से सब देखिबे। In May 2025, the 10th Governing Council meeting of Niti Aayog was held at. Again, meeting conference को जगह रे कोन होचे आकु ने कि बहुत क्वेश्चन देखिबा को मिलुची। क्लियर? तो ये मार्क करंतु दे हेते बेलु आमे जते भी देखलेनी स्पोर्ट्स एवं अवार्ड्स ता सहित मीटिंग्स किंबा इवेंट्स आकु नेकी बहुत क्वेश्चन आसुची। भरत मंडपम न्यू दिल्ली। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द यूएसए वाज द 15th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन नवंबर 2024? इदा हो। क्लियर? तो ये जगह अगेन देखंतु आसी गला एक्सरसाइज आपण पेड ग्रुप जॉइन करंतु किबा मो वीडियो भी करिवि करि पारे न करि पारे टाइम जदी हबो करिवि। मिलिटरी एक्सरसाइज लास्ट 1 ईयर रो कवर कर दबा। ठीक अछि। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 चेंज द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर इन कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम 8 इयर्स टू। तो देखंतु अमेंडमेंट को क्वेश्चन अमेंडमेंट ऊपर बेस करी क्वेश्चन पछला जगह बैंकिंग रिलेटेड जो अमेंडमेंट ताकू नेकी भी क्वेश्चन पछारछि। क्लियर? 10 इयर्स 8 वर्ष रु 10 वर्ष 10 वर्ष कर दिया गला। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स? इंडेक्स रैंकिंग तो ठीक अछि। ए इंडेक्स रैंकिंग पब्लिश करूची केउ ऑर्गेनाइजेशन ताकू नेकी भी क्वेश्चन आसुची यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी मन रखिथिबे। ए सब कंपाइलेशन मु देइची। इन जुलाई 2025 हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द कलिंग रत्न अवार्ड 2024? कलिंग रत्न अवार्ड काहा को मिलला? धर्मेंद्र प्रधान। ये ओडिशा करंट अफेयर में पढिचे। अगेन अवार्ड ऊपर क्वेश्चन ओडिशा करंट अफेयर को आमे कहबा। ठीक अछि।
Highlighted question here. India signed a $750 million currency swap agreement in October 2024 with the dash to help manage its foreign exchange crisis. Maldives सहित October 2024 देखो ए टाइप जिनस मोर भी मन ना आंसर देछि बोली मु कहि दोछि मु 2025 जिनस मन थिबो 2024 अक्टोबर सेप्टेम्बर अगस्त ए सब मोर भी ठीक रे मन नाही क्लियर. Who is the editor of the book Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages released in January 2024-25? Books and authors रघुवेंद्र तनवर. मुझे बुक्स एंड ऑथर्स ये देछि पीडीएफ देछि कंपाइलेशन देछि सेतरा आपण देखिबे. What was the key objective of the agreement signed in January 2025 between the Center of the Development of Telematics CDOT जोटा कि IIT मंडी एंड IIT जम्मू माने की ऑब्जेक्टिव कौन तो देखो तो जो एग्रीमेंट होची तार की ऑब्जेक्टिव को नेकी भी क्वेश्चन आसुची ए क्वेश्चन को मु इजी कहबी नाही नॉट इजी क्लियर. नेक्स्ट. In July 2025, which country assumed the presidency of the UN Security Council focusing on peace and Palestine issues? ये तो बहुत हाईलाइट हेतला पाकिस्तान जेहेतु प्रेसिडेंसी करूतला बोली ठीक अछि क्लियर. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस आसुची. What is the name of the 7th anti-submarine warfare shallow water craft ASWC launched by Indian Navy in October 2024? अभय देखो मिलिटरी रिलेटेड क्वेश्चंस आसुची बहुत क्लियर. Which of the following Indian companies won the Forward Faster Sustainability Award in Water Resilience in February 2025? Thermal Power Corporation Limited NTPC. आई होप जो मैंने पर्यंत वीडियो देखुंटे और जो मैंने से कहूँ जो मैंने OSSC लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर देखिए जाती से जिते OSSC एग्जाम देवे कि जेकोसी भी एग्जाम देवे ऑनलाइन मोड्रे से मैंने प्रोब्लेम फेस करेंगे एत गुड़े मन रखा बर्डन फिल हम तो जो मैंने टाइम अच्छे से ही करंट अफेयर उपर टाइम दिंतु जीके को टाइम दिंतु. एबे सिना आरआई अपकमिंग एग्जाम आसूची 20 मार्क जीएस आसीबो जेतले मेंस आपण देबे सेते तो 40 मार्क्स अराउंड होछि बुझी होछि ना नहीं. अब आई दो जो मैंने ओपीएससी एग्जाम दौरान से सेमिति 1 ईयर पढ़ी की जानती से माने. In May 2025, which two countries launched the joint military exercise Golden Dragon 2025 to enhance defense ties? Golden Dragon 2025 between which two countries? China and Cambodia. बहुत important. Military exercise again देखो तो गोटे शिफ्ट रे दीटा military exercise ऊपर question. Which country hosted the 9th Asian Infrastructure Investment Bank Board of Governors meeting held in September 2024? Again देखो तो समिट को कंट्री को कॉन्फ्रेंस होस्ट करूची मीटिंग होस्ट करूची तापरे क्वेश्चन आसुची. उज्बेकिस्तान. Who among the following emerged as the overall champions at the Khelo India Winter Games 2025? Indian Army sports upare. Now next. Which of the following days was observed across India on 24 January 2025 to promote awareness about the rights and welfare of girl child? National Girl Child Day आमे ऑब्जर्व करछे 24 जनवरी रे. इंपोर्टेंट डेज को नेकी क्वेश्चंस आसुची क्लियर. मो वीडियो लास्ट को गोटे सीरियली कहि देबी कोटा कोटा देखिबे. With which of the following companies did the Ministry of Defence sign a contract for the procurement of 6 air cushion vehicle ACV for the Indian Coast Guard in October 2024? Chogul and Company Private Limited. Annual Southwestern Air Command Commanders Conference held in February 2025 क्यों जगह रही थी पुणी वेन्यू को लेकिन क्वेश्चन आसिला गांधीनगर गुजरात रे. Which of the following para athletes was honored with the Major Dhyanchand Khel Ratna Award in January 2025? Major Dhyanchand Award, Nobel Prize, Padma Awards ये सब important रोचे. By the way pen printer prize सब प्राइज सब important prize सब important. प्रवीण कुमार. As announced in May 2025, which of the following countries become the world's top creditor nation, surpassing Japan after 34 years? Creditor माने उधारी अधिक दिए जापान एस जर्मनी ठीक अच्छे. टॉप क्रेडिटर नेशन बहुत उधार दूची. In October 2024, the Supreme Court upheld the decision of which High Court that annulled the selection of 242 candidates for primary teacher position in the OBC category due to procedural flaws.
देखो हाईकोर्ट रो जजमेंट ये सब भी इंपोर्टेंट आई होप आपण मैंने नोट करुवे ठीक अच्छे हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज 2024 देखो अगेन आसीगला नोबेल प्राइज उपरे निहो हिडन कोए Which of the following international organization held its 78th General Assembly session in September 2024? United Nations. Last 1 year. Again, कहबा पाई चाहिए last 1 year. Which of the following organization adopted a pact for the future that includes a global digital compact and a declaration on future generation? United Nations. कहली ना resolution कौन सी बड़ा बड़ा organization से सब important. Clear? Next. Who among the following was appointed as the Chief Election Commissioner of India in February 2025? Again, कहबा ପାଇଁ चाहिए same. India रा higher post holder. India रा higher post holder. ठीक अच्छे. किए हितले? ज्ञानेश कुमार. किए हितले? ज्ञानेश कुमार. Next. What was the venue of the first U23 National Basketball Championship for men and women? देखो धीरे धीरे आपण जो माने पर्यंत वीडियो देखुचंती क्वेश्चन रो थीम बुझी सारिबेनी जे को टाइप रो क्वेश्चंस आसुची मते को टाइप रो क्वेश्चंस कवर करियार अछि पूरा थीम आपण बुझिबेनी What was the venue? Guwahati, Assam. ठीक अछि. What was the rank of India in the Network Readiness Index 2024? 49th. 49th. Who among the following became the first Asian bowler to take 150 test wickets in Sena? Sena रो कौन कौन सब कंट्री आसु जिंदगी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. कंट्रीज इन जून 2025. जसप्रीत बुमराह इंपोर्टेंट रहिबो. ये हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी ये क्वेश्चन अगेन रिपीट भी हो पारे. क्लियर? In September 2024, the Karnataka High Court dismissed the petition of which individual challenging the legality of the governor's nod to an investigation against him over the alleged Mysuru Urban Development Authority land scam. ये land scam बहुत बड़ा थिला. ठीक अच्छे. कर्नाटक सीएम सिद्धारामैया ऊपर चलता फैमिली ऊपर चलता तो ये जगह टे मार्क करंतु जति भी हाई कोर्ट किंबा सुप्रीम कोर्ट रो मेजर केसेस होची से सब भी क्वेश्चंस आसुची. When did India driver Kush Maini make history by clinching the F2 constructors race in Abu Dhabi, making him the first from the country to win a FI1 coach sorry F1 एटा हुए FIA constructors world championship. अच्छा FIA constructors हाँ मो F1 माइंड थिला. F2 देखो F2 टा कोन F1 गोटे थाए F2 गोटे थाए. F1 जो व्हीकल यूज करा जे जो आपण देखंती मैक्स वर्स्टापेन एमान सब जीतती. F1 जो गाड़ी रो जो इंजिन था से बहुत पावरफुल था. F2 गाड़ी रो जो इंजिन था एते पावरफुल न था. बुझी होची. नेक्स्ट व्हिच एबे नेक्स्ट देखिबा. इन 2025 व्हेन वाज द नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 25 जनवरी. ठीक अच्छे. नेशनल टूरिज्म डे कोडी किसी जदि मु भूल कहि देली मते टिके जणे कोन पैना मो माइंड बर्तन अछि केवल क्वेश्चन रो पैटर्न बुझिया लागि. ठीक अछि. Who among the following won the Miss World 2025 title at the event held in Hyderabad on 31 May 2025? Opal, Suchata, Chuangshri. A question अलगा एग्जाम रे भी आसीची एथरे भी आसीची. क्लियर? इंपोर्टेंट इवेंट जो माने जीति चंती ता ऊपर क्वेश्चन. मुसलमान वफ Repeal Act 2025 repeals the Mussalman Waqf Act of Dash 1923. अच्छा वफ ऊपर मु गोटे सेपरेट वीडियो करछि यार हिस्ट्री को नेकी 1923 पर नेक्स्ट केबे हला 1954 एटसेट्रा जो मन देखिने वफ कोड ऊपर. तो देखो बिल एक्ट या पर क्वेश्चन आसुची. In December 2024 in which of the following states of India did Nitin Gadkari inaugurate India's first bio bitumen बेस्ट नेशनल हाईवे स्ट्रेच ऑन NH44? महाराष्ट्र. ठीक अच्छे. इनागुरेशन क्लियर बड़ बड़ मिनिस्टर मान द्वारा इनागुरेट होतबा प्लेस किंबा किसी भी कमोडिटी. इन January 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू ए फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी नियर डैश इन न्यू दिल्ली. तो ये जगह देखो एस्टैब्लिशमेंट हो किंबा इनागुरेशन हो इंपोर्टेंट रहिबो बड़ पर्सनालिटी द्वारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राजघाट रे. क्लियर?
Who among the following was named the Laurels World Sportsman of the Year in 2025? Mondo Duplantis. ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला आसीची भी सो कवर करा जायछि. What is the aim of the new heat based cancer treatment method developed by the Institute of Nanoscience and Technology Mohali in 2024 to reduce chemotherapy doses and minimize side effect? Invention कौन कहली? Invention science technology related. ठीक अछि, मेडिकल क्षेत्र रे हो भी. Where was the first ever joint ministerial meeting of the L.69 and C10 groupings of nations on the sideline of the 79th session of the United Nations General Assembly held? न्यूयॉर्क रे हेतला सेटा अलगा कथा. तो देखंतु अगेन कहया पय चाहूची कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऊपर क्वेश्चन आसुची. Where was the Indo-Turkey Friendship Association ITFL launched on 16 October 2024 to enhance cooperation between India and Turkey in areas such as trade, culture, technology and education? Again place super question. Hyderabad. In 2024, which organization published the report titled Future Pandemic Preparedness and Emergency Response, a Framework for Action? नीति आयोग. ये स्टैटिक भाव रे भी आपण आपको मन रखिबे. ठीक अछि, स्टैटिक भाव रे. Which of the following coaches received the Dronacharya Award? देखो से अवार्ड ऊपर पुणी क्वेश्चन आसला रेगुलर कैटेगरी फॉर पाराशूटिंग इन जनवरी 2025. सुभाष राणा. Under which of the following schemes did the government of India provide financial support for India's participation in the 9th Asian Winter Games 2025? क्यों स्कीम अंडर रे? गवर्नमेंट रो स्कीम देखी जिबे से स्टेट स्कीम हो किबा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्कीम हो. असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. Who among the following was re-elected as the Prime Minister of Australia in a landslide victory in the 2025 general election? Anthony Albanese, the PM President, जे भी इलेक्ट होचंती different country रे किबा जे कोनोसी कारण रो न्यूज रे आसंती important. Gulbir Singh broke his national record in the men's dash event by clocking 13 minute 11 second to win gold at a World Athlete Continental Tour in Niigata, Japan in September 2024. 5000 meter रेस रे निज रेकॉर्ड ब्रेक कले. देखो स्पोर्ट्स रिलेटेड केते क्वेश्चन आसुची. Who among the following received the Fred Darrington Award for Excellence in Art and Culture in April 2025? ये ओडिशा करंट अफेयर मन रहिला सुदर्शन पटनायक. ओडिशा करंट अफेयर बेसी डीप आसुनी, ओवरऑल जोटा टिके हाइलाइटेड सेटा आसुची. Which institute's new study investigated the role of 3D environments in bacterial growth and survival in November 2024? Again देखो आम इंडियन इंस्टीट्यूट जे कि इनोवेशन करिछि साइंस क्षेत्र रे हो किबा मेडिकल जो क्षेत्र रे भी हो टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे ताकु ने कि क्वेश्चन आसुछि. क्लियर. Anura Kumara Dissanayake won the 2024 presidential election in Sri Lanka. He belongs to which of the following political party? Political party को नेकी भी क्वेश्चन. National People's Power. ठीक अछि. LEADS 2024 was released in January 2025. What does the acronym LEADS stand for? Logistic ease across different states. ये बहुत important. ठीक अछि. तो acronym माने abbreviation फुल फॉर्म को नेकी भी क्वेश्चन आसुछि. जोटा न्यूज रे थिबो तार फुल फॉर्म को नेकी मो जतले भी करंट अफेयर वीडियो करे सेतले मो गोटो जगह रे कहे यार फुल फॉर्म को नेकी क्वेश्चन आसी पारे, यार फुल फॉर्म को नेकी क्वेश्चन आसी पारे, आकु मार्क करथुबे. ठीक अछि. लीड्स रो फुल फॉर्म होछि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. क्लियर. नेक्स्ट देखिबा. Which of the following books was written by Amitabh Ghosh and launched during the C.D. Deshmukh Memorial Lecture in January 2025? Amitabh Ghosh तांकर बुक तो बहुत इंपोर्टेंट. वाइल्ड फिक्शंस द बुक्स एंड ऑथर्स रो भी क्वेश्चंस देखिया को मिलुची. Which among the following countries topped the World Happiness Ranking for the 8th consecutive year as per the World Happiness Report 2025? Answer will be Finland. एग्जाम पूर्वरु मो इंडेक्स रैंकिंग मिलिटरी एक्सरसाइज बुक्स एंड ऑथर्स ई सब वीडियो किंबा पीडीएफ दे देबी. In October 2024, which country launched ballistic missile attacks against Israel in retaliation for the assassination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah? ये क्वेश्चन OSSC भी पचारछि. Answer will be Iran. Answer will be Iran. ठीक अछि. वार एरिया रे के कहा ऊपर टारगेट करा जाउछि, गोटे वार जोन रे को पर्सन को टारगेट करा जाउछि, अटेम्प्ट टू मर्डर करा जाउछि, ए सब देखिबे.
What was the broad theme of Asia's biggest Aero show, Aero India 2025, held by the Ministry of Defence, Government of India in February 2025? Theme को लेके question, the runway to a billion opportunity. A question repeat है पर again कहूची, which organization published the report titled State Finances, a study of budgets of 2024-25? किए ए report publish करे? Reserve Bank of India. Who among the following was selected in March 2025 for the Maharashtra Bhushan Award 2025? Ram Suttar. Again, award upre question, honor upre question. In which city of India was the 2025 India Open Badminton tournament held? Again, sports event ko jagah rehla New Delhi re. Which of the following was the theme of the International Day for Biological Diversity 2025? थीम को नेकी क्वेश्चन इंपोर्टेंट डे जेमो थीम को नेकी क्वेश्चन आज जो मैंने एपर्यंत वीडियो देखुचंती से मैंने नोट तो निश्चित करुथुबे जोटा मु कहूची एटा इंपोर्टेंट जेमति कि उदाहरण मु देखि कहूची जे स्पोर्ट्स रो इवेंट होतबा कंट्री प्लेस इंपोर्टेंट मिलिटरी एक्सरसाइज रो डिटेल्स जेमति कि केउ केउ कंट्री मध्ये रे हुए डेट प्लेस अवार्ड इंपोर्टेंट डेज एवं थीम्स ए सब नोट करूछंती ना नहीं? Which legendary Indian filmmaker known for film like Ankur and Nishant passed away at the age of 90 in 2024? श्याम बेनिगल ये ओडिशा करंट अफेयर हमें कवर करथिले कोन बेना ओडिशा रे मध्य से तांकर कंट्रीब्यूट करचंती. Which of the following books released in February 2025 is authored by Kulbhushan Kumar, a Jammu and Kashmir Administrative Service officer? Hearts and Heroes, who inaugurated C295 Tata Aircraft Complex in October 2025? Narendra Modi and Pedro Sanchez. Pedro Prime Minister kahara Spain ro ana nahi. Next, in July 2025 UNESCO removed the rainforest of the Asinana from its danger list. In which country is this site located? A particular question ame karithile. Answer will be Madagascar. On 19 December 2024, DRDO Industry Academia Center of Excellence organized an event titled DRDO Industry Academia Global Approach to Readiness of Indigenous Military Application DIA Garima at को जगह रे IIT दिल्ली रे. ठीक अछि. इवेंट केउ जगह रे ऑर्गेनाइज होउची? The Court of Arbitration for Sports was in news for disqualifying the Indian female wrestler from the Paris Olympic for exceeding the weight limit by 100 grams. Where is the headquarters of the CAS? Switzerland. Arbitration for Sports. Their headquarters? Switzerland. बेले बेले क्वेश्चन केते लिमिट रे से माने केते वेट पई से तांकु बाहर कर दिया जायतिला आकु नेकी भी क्वेश्चन आसी भी थिला. ठीक अछि 100 ग्राम. In which discipline was Mrs. Anurani awarded the Arjuna Award in 2024 by the Government of India? क्यों फील्ड रो एथलीट अनुरानी मु जदि भूल न कोथा जावलिन थ्रो ना सेटा भी आसी जो एथलीट अंडर रे जावलिन. रिसेंटली ओडिसा रो कलिंग स्टेडियम रे खेला जायतिला कॉन्टिनेंटल ब्रोंज जेतरे से गोल्ड पाइतिले माने टॉप करितिले जावलिन थ्रो रे उत्तर प्रदेश रो से. Who among the following won the Abel Prize in March 2025? Masaki Kashiwara. Question already पढ़ी. Where was the first ever inter-command conference on musculoskeletal rehab and sports injury hosted in India? Army Hospital, Delhi Cant. Who among the following received an honorary award for Denmark in March 2025? Vijay Shankar. Award को नेकी question. Which of the following two teams contested the 2025 ICC World Test Championship final at Lords? Australia and South Africa. A question both important. ICC World Test Championship. Lords, Man England. Which of the following countries became a member of BRICS New Development Bank in May 2025? Algeria नवा member है ऑप्शन गुडी को मध्यरु. The Jobs at Your Doorstep report released by the Government of India in 2024 was published by which organization? World Bank द्वारा पब्लिश करा जायतिला Jobs at Your Doorstep. ठीक अछि. Jobs at Your Doorstep report.
On which of the following dates was the Minority Rights Day celebrated in India to highlight the issues faced by minority communities such as discrimination and social inequalities? केबे ऑब्जर्व करा जाए डिसेंबर 18 रे ऑब्जर्व करा जाए माइनॉरिटी राइट्स डे. Which major international event marking its 11th edition was held in Singapore from October 22-24 2024? Asian Clean Energy Summit. Asian Clean Energy Summit 11th edition 2024 रे. On 11 April 2025, Jyotiba Phule was remembered for which of the following contribution to Indian society? मु ग्यारंटी दउची एटलिस्ट किछि क्वेश्चन आपण पाई जिवे अपकमिंग एग्जाम रे जो माने भी 2025 रे एग्जाम देबे ऑनलाइन एग्जाम. ज्योतिबा फुले फाउंडिंग द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया. Who among the following co-authored the 2025 book March of Glory on India's 1975 Hockey World Cup win along with Aero de Cruz? K. Arumugam. From which date did the provision of the Bharatiya Vayuyan Abhiyan 2024, which aimed to revolutionize India's aviation sector, enhancing safety, innovation, growth, and global compliance, come into force? 1st January 2025. Again, देखो तो सही act, the अधिनियम act, etc. आपने की question. Who launched India's first AI data bank in November 2024? AI data bank launch करा जाइतला जितेंद्र सिंह, Minister of State. What is the role of magnetic hyperthermia based cancer therapy in the new heat based cancer treatment method developed by Institute of Nanoscience and Technology INST Mohali in 2024? ये टॉपिक रू दीटा क्वेश्चन आसिलानी सही गोटे आर्टिकल रू दीटा क्वेश्चन. It acts as an adjuvant to reduce chemotherapy side effects. देखो ये क्वेश्चन रिपीट है ना नहीं रिपीट है. Who among the following was elected president of the 80th United Nations General Assembly in June 2025? Annalena Baerbock. Annalena Baerbock. 80th United Nations General Assembly presidency. Important here. Repeat here question. Which among the following Indian writer won 2025 International Booker Prize for the Kannada short story collection Heart Lamp? ये भी आपनकर मने थिवो निश्चित. बानु मुस्ताक. Which of the following cities will host the 2026 Commonwealth Games? Glasgow. एक क्वेश्चन एबे भी हमें पढुचे. Glasgow. Who among the following became the fastest Indian to claim 200 wickets in one-day international matches as of February 2025? Mohammad Sami. Sports को लेके बहुत क्वेश्चन. Who has been appointed to lead the one-man commission on scheduled caste sub-classification in Telangana? कहा को अपॉइंट करा जाउची अपॉइंटमेंट्स? जस्टिस समीम अख्तर. In November 2024, the 5th edition of the Vietnam India bilateral army exercise Vinbax काका मध्य रे इंडिया एंड वियतनाम सरला. ठीक अछि क्लियर. को जगह रहला ताकु नेकी क्वेश्चन आसुची अंबाला. May 2025 रे who among the following scaled Mount Everest for the record 31st time? कामिरिता नेपाल रू कामिरिता शेर्पा. Which gymnast won the Laurels World Sports Woman of the Year Award 2025? Simon Biles. ये क्वेश्चन भी कवर करा जाइए सब पढ़िथिबे आपन मने थिबे जते हाइलाइट पचरा जाउची से सब पढ़िथिबे. एडी विजय रूपानी पढ़िचंते आपन माने. Ahmedabad plane crash. Who passed away in June 2025? Was the former chief minister of Gujarat. What engineered protein did researchers from IIT Delhi and CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology use to develop Feluda for detecting Helicobacter pylori mutations in rural India? यार आंसर मु भी जाननी मु एते डीप तो पढ़ेनी ए सब साइंस एवं टेक्नोलॉजी रो इन्वेंशन एते डीप मेनली मेडिकल क्षेत्र रे. तो देखो को टाइप रो क्वेश्चंस आसुची. Which of the following groups of sports persons were awarded Arjun Award lifetime achievement category रे for outstanding performance in sports and games in 2024? सुचा सिंह, मुरलीकांत, राजाराम पेटकर. अर्जुन अवार्ड ये सब मन रखिए. Which institute in India developed the nicomycin loaded polymeric nanoparticles of antifungal
drug delivery in 2024? Agarkar Research Institute, Pune. देखो इनोवेशन ऊपर केमती क्वेश्चन. Which legendary Indian actress known for her work in both Hindi and Bengali cinema celebrated her 80th birthday in December 2024? जने 80th birthday celebrate कर ताकू नेकी क्वेश्चन. शर्मिला टैगोर एक्चुअली लेजेंड एथि को जाउची बहुत टाइम होला से सस्टेन करी अछंती इंडस्ट्री रे. Which of the following Indian hockey players was conferred the Major Dhyanchand Khel Ratna Award in January 2025? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला. अगेन भी आसी पारे हरमनप्रीत सिंह. अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? एटा तो आसी गला महाराष्ट्र कथा. Who among the following won the men's single title at the Japan Open 2025 held in July? जापान ओपन के जीतला CU Where was the fourth foreign office consultations between India and Zambia conducted in 2024? देखो तो अगेन कॉन्फ्रेंस ऊपर क्वेश्चन. इंडिया जाम्बिया मध्य रे कोडी हेतला लुसाका जाम्बिया रे. Who among the following received Padma Bhushan Award for 2025 in the field of sports? ऑप्शन गुड मध्यरु किए पद्म भूषण पाइछन्ति PR श्रीजेश गोलकीपर मने थिबो निश्चित. In April 2025 India signed an agreement to host headquarters of which global wildlife conservation body? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस गोटे जरा क्वेश्चन पचार रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रे हमर नाइबर कंट्री किए ऐड होईची. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबे. आई होप आपण माने पर्यंत वीडियो देखुथिबे. द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 वाज सेट टू रिपील द मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ व्हिच ईयर? देखंतु 1955 रो एक्ट ताको रिपील करा गला. ठीक अछि. न्यूज को आसिला ताको नेकी क्वेश्चन. द बिल एक्ट आको नेकी क्वेश्चन आसुची. बिल एक्ट ठीक अछि. अमेंडमेंट. Who among the following has received the Padma Bhushan Award for 2025 in the field of journalism? Ram Bahadur Rai Padma Gunegi Award. Who among the following are the Bigyan Yubha Awardee in the field of agriculture science in 2024? Bigyan Yubha Awardee Krishnamurthy SL and Swarupa Kumar Parida. Cover करछे. In November 2024, which country hosted the 29th UN Climate Change Conference? Azerbaijan. ये तो बहुत हाईलाइटेड. ये तो बहुत ही हाईलाइटेड. आई होप माने मु जति भी क्वेश्चन कलिनी ए जगह आपण पूरा थीम बुझी सारथिबे. कोन पढिबे कोन नाही पूरा बुझी सारथिबे. इन जुलाई 2025 3 Khmer Rock regime sites from which country were added to the UNESCO World Heritage List? ये इंटरनेशनल करंट अफेयर रे मते जने जो दिन एग्जाम देके आसले से दिन मते स्क्रीनशॉट पठै थिले जे सर एटा आपण कवर करथिले क्वेश्चन आस्थिला. कंबोडिया तीनटा साइट लिस्टेड हेची. Along with India, which of the following countries participated in the joint military exercise Al-Najah in September 2024? Al-Najah India सहित किए ओमान. Which of the following Indian states celebrated Utkal Divas, an annual event commemorative its formation on 1st April 2025? या ପାଇଁ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ हो. On which of the following days of March 2025 was a National Vaccination Day observed? National Vaccination Day केबे ऑब्जर्व करा जाय? 16 मार्च रे. 16 मार्च रे. इंपोर्टेंट डेज केते इंपोर्टेंट देखंतो ए जगह रे. What was the theme of the World Wildlife Day celebrated on 3 March 2025? देखो ए जगह रे पुनी पचारला गोटे शिफ्ट तीनटा इंपोर्टेंट डेज थीम को नेकी क्वेश्चन. थीम रखा जायतला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट. Which of the following Indian author wrote the book The World After Gaza, published by Juggernaut Books in February 2025? Pankaj Misra. From September 30 to October 13, 2024, the 8th edition of the India-Kazakhstan Joint Military Exercise Kajind 2024 was held at कोठी हेइथिला. को जगह हेइथिला ए सब बहुत इंपोर्टेंट देखंतो. क्लियर. Now, in which district of Malaysia was the joint military exercise Harimau Shakti between India and Malaysia held in December 2024? Pahang. देखंतो क्वेश्चन एमती भी आसीबारे. हरिमाउ शक्ति इंडिया एवं आउ केउ देश मध्य रे हुए तो मन रखिथिबे मलेशिया. On which date was the International Day for Biological Diversity observed in 2025? International Day for Biological Diversity observed केबे? May 22. देखो तो इंपोर्टेंट डे गुडी को रिपीट हे पारे तो ए गुडी को आपन पय बहुत फ्रूटफुल रहइबो. Which of the following was not included as a medal sport at the Aero India Beach Games 2025? कोटा इंक्लूड नथिला पचारला. देखो तो स्पोर्ट्स को केते डीप नोची से. टग ऑफ वार या अर्थ कोटा इंक्लूड थिला बीच सॉकर,
pancake सिलट ओपन वाटर स्विमिंग आई थिंक खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 को नेकी मु सेपरेट वीडियो करी थी बोधे Which of the following cities was selected to host the first ever Women's Hockey India League in January 2025? That is Ranchi. That is Ranchi. Who among the following was posthumously honored with the Sarvottam Jivan Raksha Padak 2024 by the Government of India? Sarvottam Jivan Raksha Padak. यहाँ पर भी क्वेश्चन पिंटू कुमार साहनी. पिंटू कुमार साहनी. Which of the following disciplines was introduced as a demonstration event at the Khelo India Youth Games 2025? Esports. Esports. ये भी important थिला. In which location was the Bharat Mobility Global Expo 2025 held in January 2025? Delhi and Greater Noida. Bharat Mobility Global Expo 2025. What was the combined capacity of all supercomputers in India till 21 November 2024? Petaflops. 32 petaflops. माने capacity India रा जते भी सुपर कंप्यूटर अच्छी सबको मिसे की combinedly. On 5 January 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Regional Rapid Transit System (RRTS) between Dash, reducing the travel time to 40 minutes. New Ashok Nagar in Delhi, सहीबाबाद इन उत्तर प्रदेश. देखो जिते भी बड़ बड़ मिनिस्टर अच्छा द्वारा इनागुरेट करा जिन सब पचारुची. Which of the following countries passed 2 bills effectively banning the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian refugee from operating in its territories? ये तो समस्त जानी इजराइल ही हैरान करुच्ची. हैरान इन द सेंस कौन से एड पहुंचेबा को दौनी. इंडिया, बांग्लादेश एंड डैश हैव साइंड tripartite agreement in October 2024 to facilitate cross-border electricity trade. ये हमें कवर करते बाकी बहुत पुराना कवर करते नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. नेपाल रो इंडिया दे कि बांग्लादेश को जीव इलेक्ट्रिक. In 2025, when was the National Science Day observed in India? National Science Day केवे ऑब्जर्व करा जाए 28th February डे. 28th February. Which Indian ministry published the 7th edition of NVStats India 2024 Environment Accounts? अच्छा OSSC CGL एग्जाम कथा मने पड़ी गला 2024 OSSC CGL जो ग्रुप करथिले सेतरे ए NVStats India 2024 रो रिपोर्ट ता ही दे देतिली. जो माने थिले से माने जानी थिबे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा ये पब्लिश करा जाए. एथरे इंडिया रो बहुत किछि डिटेल्स दिया जायता है. Who among the following wrote a memoir titled Source Code My Beginnings? एक क्वेश्चन भी आसीथिला. ये आउ थरे भी आसीबार चांस अछि. बिल गेट्स द्वारा लिखा जायतिला. ठीक अछि. What is the title of the 2025 book written by Jack Tapper and Alex Thompson on Joe Biden's presidency? ये तो आउट ऑफ बुक आउट ऑफ ब्लू है गला, आउट ऑफ ओशियन है गला. ओरिजिनल सीन मूवी के पढ़ी नथिले एटा. ठीक अच्छे. तो ये थिला टोटल अराउंड बहुत गुड़े क्वेश्चन जगह में कले आपन जानि पारथिबे थीम. मु कहथि वीडियो रो लास्ट टाइम मु कहि बोली बट मु कहिबिनी. आपन माने नोट करिथिबे जदि परिबे कमेंट सेक्शन रे आपन कमेंट करिकि जणेबे जे कोन कोन सब टॉपिक्स आपन एथरो नोट कले से हिसाब रे आपन प्रिपेयर हेकि जिवे. आ 2025 रे जो माने भी एग्जामिनेशन देबे से माने लास्ट 1 ईयर रो करंट अफेयर देखिबे एवं एई जो वीडियो आपन देखिले इथरो क्वेश्चन आसीबार चांसेस 50% रो अधिक अछि. किछि ना किछि क्वेश्चन आपन पाई जिवे अगेन. क्लियर. सिमिलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट गुडी कर नै के आसीबे जे ऑनलाइन एग्जाम हेले को टाइप रो क्वेश्चंस आसे टीसीएस द्वारा को टाइप रो क्वेश्चन फेस करिवे. तो ठीक अछि. वीडियो को कंप्लीट देखथिबार धन्यवाद. वीडियो भल लागितले लाइक करिवे, शेयर करिवे सांग मन सहित. फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करथिले सब्सक्राइब कर नेबे. अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल.